अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve numericals of chapter number 3. So let's move towards the whiteboard. Now, numerical number 3.1. A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. So, what is its mass? तो उसका mass क्या है, ये आपने find करना है. अब एक बॉडी जिस पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है 20 न्यूटन की और वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उस बॉडी का मास क्या होगा? सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो राइट डाटा फर्स्ट. सो डाटा हमें यहां पर गिवन है फोर्स F which is equals to 20 Newton and we have acceleration A which is equals to 2 meter per second square. Now we have to find mass M which is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that according to Newton's second law, according to Newton's second law, which is F is equals to ma. So just we have to put the values in it. So force है 20 न्यूटन, mass जो कि आपने फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये 2 यहाँ पर आके फर्दर डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन राइट हेयर दैट m is equals to 20 divided by 2. Now 2 1s are 2 and 2 10s are 20. So the mass m is 10 kilogram. So this is the mass of the body, which is 10 kilogram. Clear? Numerical number 3.2. The weight of a body is 147 Newton. So what is its mass? Take the value of g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक बॉडी का वेट है 147 न्यूटन, तो उस बॉडी का मास क्या होगा अगर g की वैल्यू हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर भी हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा में आपको गिवन है बॉडी का वेट विच इज 147 न्यूटन और आपको g की वैल्यू बता दी गई है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड mass m that is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that W is equals to mg. As we have to find mass, तो g फर्दर वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो m का फॉर्मूला बन जाएगा W डिवाइड बाय g. Simply just we have to put the values in it. So mass m is equals to W की वैल्यू है 147 न्यूटन डिवाइड बाय g की वैल्यू है 10. So 147 divided by 10, the answer is 14.7 kilogram. So this is the mass of the body, which is 14.7 kilogram. And you have to write down the result, which is the mass of body is 14.7 Newton. Clear? Now move towards the next numerical, which is 3.3.
how much force is needed to prevent a body of mass 10 kilogram from falling? तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि एक बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए जिसका मास हो 10 किलोग्राम? तो एक बॉडी को फॉल करने से बचाने के लिए, तो एक बॉडी को गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जिसका मास हो 10 किलोग्राम? लेट्स फाइंड इट आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लेंगे डाटा. सो डाटा में आपको गिवन है mass, and mass m is 10 kilogram, and we know that the gravitational acceleration g, which is equals to 10 meter per second square. Now we have to find force. So F is equals to question mark, and this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that F is equals to ma according to Newton's second law, which is F is equals to ma. अब इस केस में क्योंकि बॉडी जो है वो आपकी नीचे डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है इस फॉर्मूले में वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. So F is equals to mg. Now just we have to put the values in it. So F is equals to mass है 10 kilogram and g is 10 meter per second square. So 10 into 10, which is equals to 100 Newton. So this is the amount of force which is required to prevent the body from falling. And you have to write down the result, which is that this force is required or needed to prevent a body from falling, and it acts in upward direction. It acts in upward direction. Numerical number 3.4. Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kilogram. So it is basically kilogram. So a mass है 50 किलोग्राम का और वहां पर फोर्स एक्ट कर रही है 100 न्यूटन की. तो आपने फाइंड करना है कि इस केस में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहां पर फोर्स गिवन है which is equals to 100 न्यूटन और आपको mass given है which is 50 kilogram, and you have to find acceleration which is question mark because we have to find it. Now write solution. So again, according to Newton's second law, according to Newton second law, which is F is equals to ma. As we have to find acceleration, तो ma से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर वहां पर जाकर ये m डिवाइड हो जाएगा. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा a is equals to f over m. Clear? Now just we have to put the values in it. So a is equals to
फोर्स है 100 न्यूटन की, डिवाइड बाय मास है 50 किलोग्राम. So 50 ones are 50, 50 ones are 50, and 50 twos are 100. So we can say acceleration A is equals to 2 meter per second square. So this is the acceleration produced in this case, and you have to write down the result as the acceleration produced in a body of mass 50 kilogram is 2 meter per second square. This is the result. Clear? Numerical number 3.5. A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? So, एक बॉडी जिसका वेट है 20 न्यूटन का, तो अब कितनी फोर्स यहां पर रिक्वायर्ड होगी कि आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ इसको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर सकें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा में आपको गिवन है बॉडी का वेट विच इज 20 न्यूटन, और आपको एक्सेलरेशन भी बता दिया गया है विच इज 2 मीटर per second square, and you have to find the force which is required to lift it vertically upward. आपने find करना है force which is required to lift it vertically upward. So this is the quantity which we have to find. So अब यहां पर बॉडी का जो वेट है itself is a force. तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो यहां पर फोर्स F1 है वो आपका है बॉडी का वेट, बिकॉज आपको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए आपको उस बॉडी के वेट से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी होगी, तो तब जाकर आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ उसको वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर सकते हैं. सो एक फोर्स तो हमारे पास हो गई उसकी वेट. सो यहां पर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि F1 force which is equals to weight of the body and F1 which is equals to 20 Newton. Now we have to find F2, and we know that according to Newton's second law, according to Newton's second law, which is F is equals to ma. तो हमारे पास डाटा में एक्सेलरेशन तो है, लेकिन हमारे पास डाटा में मास नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, which is W is equals to mg. As we have to find mass m, तो g फर्दर यहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा. So m is equals to w over g. Simply we have to put the values in it. M is equals to w is the weight which is 20 Newton, and divided by g is the gravitational acceleration which is 10 meter per second square. So we know that g is equals to 10 meter per second square. Now simply 10 ones are 1 and 10 twos are 20. So mass m यहां पर हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम. तो आप सिंपली फोर्स फाइंड कर सकते हैं. So F is equals to mass m is 2 and acceleration is also 2. So 2 into 2 which is equals to 4 Newton.
सो अब 4 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी कि वहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके. सो हम यहां पर मेंशन करते हैं एज 20 न्यूटन फोर्स is required to support it in rest position and 4 Newton is required to produce acceleration. Required to produce acceleration. So F force is equals to F1 plus F2. So this is basically the F2 force which is required to produce the acceleration. So just we have to put the values in it. F1 is 20 Newton plus F2 is 4 Newton. So 20 plus 4, it becomes 24 Newton. So this is the force required to lift the object vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square. So you can write the result as 24 Newton force is required to produce acceleration of 2 meter per second square. Clear? आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.